Welcome viewers, welcome to my channel. Today I'll do the evaluation of a complex number I to the power 592 plus I to the power 590 plus I to the power 588 plus I to the power 586 plus I to the power 584 whole divided by I to the power 582 plus I to the power 580 plus I to the power 578 plus I to the power 576 प्लस आई टू द पावर 574। अब ये आपको इवेल्युएट करना है। ऑप्शन है -1 0 -i i। देखो हम ये लिए हैं क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। अब तुमको 2-3 फैक्ट बताते हैं। आई स्क्वायर इक्वल टू -1, सो आई स्क्वायर to the power 4 can be written as I square whole square, so this is equal to -1 whole square, so this is 1, and n is equal to 4m plus r, so I to the power n equal to I to the power 4m plus r, or I can write I to the power 4m into I to the power r, so this is I to the power r। हम ये फैक्ट ये इतना जानना बहुत जरूरी है। अब क्या करते हैं, न्यूमरेटर में से I to the power 584 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर बचता है I to the power 8 प्लस I to the power 6, देख लो ठीक से, I to the power 4 प्लस I स्क्वायर प्लस 1, एंड ये यहाँ पर बच रहा है I to the power 574, so I to the power 8 plus I to the power 6 plus I to the power 4 plus I square plus 1. So these two cancels. So this is equal to I to the power 584 and minus 584 minus 574. So I can write this I to the power 10. So this can be written as I to the power 4 into 2 into I square. So this is I to the power 4, this is 1. Just now we have studied I square equal to -1. So answer is your A.